Assalamualaikum. Hey, this is Asif Kareem and you're watching Asif Kareem Views. Today I'm going to show you how to create a like button and subscribe button on your YouTube channel. तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने YouTube चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। Before we are going to start the video, please press the bell icon and subscribe my channel. Let's start the video. तो मूविंग ऑन टू वीडियो, और हम वीडियो की तरफ आ चुके हैं। तो हम अब काइन मास्टर को ओपन करेंगे। वी आर ओपन द काइन मास्टर। इट्स ओपनिंग। टेक एम्प्टी प्रोजेक्ट हम लेंगे। तो सबसे पहले हम मीडिया ब्राउज़र में जाएंगे। वी गो टू मीडिया ब्राउज़र एंड टेक ए बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे। तो हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। वो टेक ब्लैक कलर एंड चेंज टू ग्रीन। Then we should take a picture of our channel। तो हम अपने चैनल की एक तस्वीर लेंगे। I already make this, मैंने पहले से ये बना के रखी हुई है। तो देन वी शुड गो टू मीडिया, और अब फिर हम दोबारा मीडिया की तरफ जाएंगे। आई ऑलरेडी इंस्टॉल ए वीडियो। मैंने इस बेल आइकन की एक वीडियो बना के रखी हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन वी शुड गो टू क्रोमा की। हम क्रोमा की तरफ आएंगे और इसे इनेबल कर देंगे, और इसे थोड़ा सा इनेबल कर देंगे। ठीक। देन वी select it। Now you should try to adjust this। Where you want to set that। Now set it। Now your like and subscribe button is ready। आपका लाइक और सब्सक्राइब बटन तैयार हो चुका है। तो इसे हम सेव कर लेंगे गैलरी में। तो आई जस्ट सेव वीडियो टू गैलरी एंड देयर इज ए क्वालिटी ऑप्शन इज देयर। सो मीडियम, select medium and export to this project। Now our like and subscribe button is ready। So we go to empty, we take a media, and where you want to set this and play your button। So we select a background image and import our video। तो हम अपनी वीडियो को इसमें इंसर्ट करेंगे जो हमने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन की बनाई है। तो हम उसको दोबारा से लेते हैं। तो हमारे पास ये एक्सपोर्ट में पड़ी हुई है, तो इधर से हम ये ले लेंगे। तो हमने ये वीडियो ले ली है। तो अब हम
की में जाएंगे, we should go to chroma key and enable it. Now your like and subscribe button